अमेरिका के आने वाले नए वजीर खारजा मार्को रूबियो जर्नैलों के इतना खिलाफ क्यों हैं और उनकी जानिब से चलाई जाने वाली हुकूमतों के इतने क्यों खिलाफ हैं, आपके सामने रखते हैं। नुसरत जवेद सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी थी कि एक साहब नामजद अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को मिले हैं। बकौल उनके सामने वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अपने स्टाफ को हदायत की कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर से पूछा जाए कि वहाँ इमरान खान और इसकी जमात के साथ क्या चल रहा है। यानी कि मार्को रूबियो ने अभी हल्फ नहीं उठाया, उससे पहले ही वो इस मामले को समझना चाहते हैं और आते ही इस पर कोई बड़ा फैसला भी करना चाहते हैं। वो अब मार्को रूबियो के हवाले से कहा जाता है कि वो जर्नैलों के बहुत खिलाफ है। वो समझते हैं कि ये जर्नैल हमारे लिए बहुत मसला है, ये अपनी ताकत को बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, मसले मसाइल पैदा करते हैं हमारे लिए, और हमारे सामने ये कहते हैं वाह वाह अमेरिका अमेरिका, और हमारे सामने ये प्रो अमेरिका बनते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे खिलाफ बयानात देते हैं। यानी जैसे आपने देखा कि जियो न्यूज़ ने ट्रम्प के खिलाफ बयानात दिए, तो इसके बाद जो है जियो को ये भी कहा गया कि वो आर्मी कंट्रोल करती है, तो इससे फिर अमेरिका और ज़्यादा गुस्सा हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट तो हमारे साथ होती है, लेकिन वो कैसे ही हमारी ही हुकूमत के खिलाफ बयानात दिलवाती है इन चैनल से। तो मार्को रूबियो जर्नैलों के क्यों खिलाफ हैं, ये आप उनको ज़रा सुने। Do whatever you want. Just don't do it here. If you do it in your country, if you do it in our country, we'll cut your head off. If you do it somewhere else, that's not our business. That's the deal these dictators cut with extremists. And it's not a coincidence that there were Egyptians involved in the 9/11 plot. And these were not Egyptians that came from poor families. They came from prominent and distinguished families in Egypt. Which leads me to the second point. These dictators allow anti-Americanism. Because imagine if you lived in a dictatorial country. You're not allowed to protest the government. You're not allowed to protest your leaders. There are only two things you're allowed to protest: America and Israel. And so that's what everybody does. It's almost a release valve for frustrations. And then they've got a state-controlled media that feeds into anti-Americanism. Do you know that there are media outlets in Egypt under Mubarak and even now that tell the people in Egypt that in America denying the Holocaust is a crime? Denying the Holocaust is dumb, it's outrageous, but it's not a crime in America. And yet they spread these lies, these anti-American lies through the region. Of course there are people in the region that hate us, because our so-called dictatorial friends and allies have allowed anti-Americanism to grow and be fostered, because it helped them hold on to power. So these dictators were not good for the region and not good for America. And the choice should not be between dictators and democracies. The second fallacy is, well, we'll just have an election, everything will be better. That's not true either. Democracies can elect people that don't like us too. So this is not an easy issue to confront. But disengaging from the region is not the solution.